Today we have a lecture series. Can talk on any topic related to vegetables. Welcome, Dr. Khursheed. He that you can knowledge. Really great organizers of this program. That I'm having getting rather some. One of the best experiences that why we are not able to go for potato of the year. What is the problem? So actually, if we will start with the potato cultivation in Jammu and Kashmir scenarios at the world level, what's at the global level, narrow down. Thereafter, then we'll see whether we are having some sort of entrepreneurship opportunities for you. So you will yourself come to the place that yes, thought some sort of, and we need some sort of programs for going forward. One of the things is that this is the advances in the quality plant material production. And you can see from the photograph is that the aeroponic elevation of the product. Speaking about potato, we know that at the world level it's having an area and production as well as the productivity. What is important for us is that the productivity. If we will take the global average of the potato, what is the productivity? It's 17 or 170 quintals or 17 tons. So you have to just keep on thinking that why we are doing potato across the world. So on an average, we will see what is the production level. Per unit, it's 70 tons per hectare. And then in India, we see it's around 19.5. And then in Jammu, in Kashmir, you can see that the productivity levels they're going to decrease. So this is the world scenario where China you will see. And in vegetables also China is having the highest area under vegetable production as well as the area. Fine. So next to the China in the world is India. So we see there are the ratios between the United States, Germany, Bangladesh, France, Netherlands, and Poland. This is some sort of and how much is the percentage in the total world production for the China is 25%. And coming to the India, it's 12%. Now this is an opportunity. Why we are saying that India is having already a share of 12% in the total world production, it means already we are in the world market. So, potato scenario. So it's actually something like UP, West Bengal, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, and others. And others, GMT is in the picture. Now it's narrowing down to the GMT, where actually we want to just step up the production. Have the more area under potato production, have the more production levels as well as the productivity. So once we will go for horizontal expansion. We'll bring in more area under production, and then our production level will also increase correspondingly. That's natural. At the rate of you will see that depends upon the productivity level. What was the productivity level? Around we will say 15 tons. Maybe it's around now somewhere 17 tons per hectare in our experimental farms. What's the productivity level? It's around 270 quintals per hectare. That is 27 tons per hectare. So there's a vast gap. Once we see our experimental fields and then we go to the farmer's field, there is a huge difference. There's a huge gap in the production levels. Why so? And we'll be speaking about that also.
So, for example, now we will say the yield gap between the farmers in the developing and the developed economies. That represents a loss of opportunity of more than 400 million tons of potato. So, this is actually we are seeing your future somewhere. In the developed countries, why the productivity levels are so high? Why? And then in the developing countries, why the production or the productivity levels are very low? For example, maybe the productivity levels in US may be very high. In the India, it may be very low because still we are in the we are in India is a developing economy. So, how do you feel that you will adopt some of the techniques or the methodologies or some sort of good innovative techniques in your own form and then come to the level of the developed economies? Don't you feel that you have an employment opportunity there? Yes, there is. So this is for the picture, and you know it was because of the only one disease, Irish famine. So this is now that was only one disease that caused the Irish famine. We need not to go into the details of that. Now currently, what we are facing now. What we are facing? Was late light of potato. What we are facing? Nowadays, viruses. You might be knowing that virus, coronavirus, a human being was looking physically, he was looking very healthy, but then if he used it to be very positive, use it to be positive tested for the corona, what actually was coming to our mind? He will collapse. The same is true of the potato also. Once we have viruses inside potato tubers, right? Now consider this is a potato tuber, and if this potato tuber is having a virus, what will happen? It will not be able to give you huge production levels. It will not be able to exploit its full genetic potential. So there will be an issue. There will be an issue. The farmer will not be able to realize the yield, which actually a scientist is telling him. Tomorrow what will happen? The yield levels will decrease. For example, we have so many tubers, potato viruses. This is, for example, a tuber showing disease symptom due to potato virus. Why? So you can see a sort of external symptoms also. And then in the leaves, what do you see? Yes. You are actually able to feel and look at the leaves. What the actually the virus infection? Exactly. Will not be like now. So this is rose mosaic symptoms. This is then potato leaf roll virus. One virus that causes the roll. Okay, this is the normal. This is the disease. Internal will be like this. Internal necrosis of tubers. That's a symptom of potato leaf roll virus. Fine. You may observe this by cutting the tubers at home also. Alpha mosaic virus known by infection. That's known as calico. And then potato spindle tuber virus. The spindle shape of the potato tuber. Then this is soft rot. Now, for example, you will look at this. This is the yield from virus-free potato, and this is the yield from virus-containing plant. So you can see the difference. Just compare. Is there any sort of difference? So productivity levels will vary. So what happens is that now what will we do? Now you have seen that what happens is that if we have some problem with the seed, what we have to plan? If it is infected with the virus, what will happen? Farmers will not be able to realize the yield. That is one thing. So what will we do? We want to have a very good
planting material, quality planting material, which will be best not only in terms of that it will be free from the infections, which should be having real genetic yield potential. That's it should be the best variety which will be available to the area. So that's also it should have all the good traits of a good quality seed. Fine. So now we are looking at how is it possible for us to give to the farmer a very good planting material, potato, so that once he will plant the crop and then he will have very high yields, his economy will boost up, or so we have to actually think of some techniques by which we are able to generate good quality planting material. How to develop that and why is that important? Now coming to the importance of the good quality planting material in potato, we will look at the scenario of the Kashmir. Fine. Now we see in the month of March we plant potato tubers, and then it's March, April, May after 3 months, and in the month of June after 3.5 months. And then we go for the harvesting. Once we harvest the crop, this crop is now having a dormancy for at least 2 to 2.5 months or 3 months like that. This is the golden period or window for us where we are having our indigenous potato available for table purposes, for eating purposes. Now, good? No problem up to this one. So, June, July, August. For 3 months, we are having our own indigenous potato available. Now, how many months a year is having? 12. How many months we are having our own potato available? 3. How many are the remaining months? 9. For 9 months, why from the potato is now coming from the outside states. That's we are importing. For how many months now? 9 continuous months. So now how do you feel about it? How do you feel about it that for the continuous 9 months we do not have our own potato? Is there really very good market available? It is. And then we have another very good actually interest as well as an advantage with our Jammu and Kashmir also. That too with the Kashmir region also, because we do not have to go for enough of the pesticide sprays. Right? Because we have temperate type of climate. बहुत ही moderate climates यहाँ पे होते हैं. Insect attack almost नहीं होता है. पंजे का attack बहुत कम होता है. Once you do not have aphids or the carrier of the bacteria also, the viruses also, virus भी यहाँ पे naturally with the result हमारा एक तो खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो सीड सर्व करेगा फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया आल्सो. दैट मच इज द अपॉर्चुनिटी. अभी हमारी एनुअल ग्रुप मीटिंग लास्ट ईयर यहाँ पे हो गई थी. तो एनुअल ग्रुप मीटिंग ऑफ पोटैटो, व्हेन इट वाज डिसाइडेड दैट इफ the hills of Kashmir Valley are found free of nematodes, then we will utilize the entire hills of Jammu and Kashmir, जो भी suitable होंगे for potato cultivation, for planting material, and then we will sell it to the outside. We will use it to the as a planting material for rest of the India. क्योंकि हिमाचल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनका nematode infestation. They are having a now nematode infestation. With the result, nematodes भी क्या करते हैं? बहुत प्रॉब्लम करते हैं एक्सप्लॉइट करने में जेनेटिक. With the result, that was a really a very good, that is rather a very good wonderful opportunity for us. One is that for eating purpose or for the table purpose. Second is that if we know that the Kashmir Valley is becoming the potato seed producer, how the rest of the, so how do you feel how much huge is now the entrepreneurship opportunity for the people? Yeah, we have enough. That was one. Second part is that yeah, we have enough. 3 crop continuous. First is our normal, जो हम लगाते हैं, what we grow from March to June. If we are having quality planting material available in the June, we can go for July soon, or the best we recommend is August. Fine.
we can even go for ending July somewhere. We can just have a gap of 1 month. Then in the month of August, we can go for second crop. By the end of the November, our second crop is ready. And if then we are using Tapoli houses, the third crop we can sow, and then that will be available up to March. So continuously, actually, we can go for the potato cultivation and having the potatoes available for us. What is then the problem? Why we do not go for second crop or the third crop? What is the problem? The problem is that we do not have seeds available for us. What is then the problem in the month of? Why we do not go for second crop or the third and then for third crop in the month of? The problem is that we do not have seeds available for us. You will say why? Why we do not have enough of this? The problem lies even with the first crop. अब हम क्या करते हैं? हम जून में हार्वेस्टिंग करते हैं. In the month of June we go for harvesting. Then it is July, August, September, October, November, December, January, February. 8 months, continuous 8 months. What we have to do? We have to keep a portion of the potato which we have harvested in the month of June in the store, so that we are able to use them as a seed for the next year. And we have to go for storage of about 8 months. Where you have storage losses, where you have physiological disorders, where you have diseases, you have insect attacks. Fine? So do you feel somewhere how huge is the problem with the potato cultivation in the J&K? It's huge, it is tremendous. And while you have a problem, you have an opportunity. Magnitude of the problem speaks about the magnitude of the opportunity for the entrepreneurship development. That is so beautiful for us to harvest. Now you will be very much wondering, in the month of Feb, the farmers come and they say we need potato tubers. What seed? What seed? Now we get the seed from the our side. farmer को पता होता नहीं, farmer को जो कुछ सेव करते हैं ना अपने वो स्टोरेज वगैरह उतना नहीं चलता. बेचारों के पास वो किससे सड़े हुए आलू होते हैं, वो उनको लगाते हैं. एफिड अटैक आ गया स्टोरेज में, वायरस भी वहीं से घुसा, ऑलरेडी श्रिंक होता है बहुत पोटैटो ट्यूबर्स, कैपेसिटीज नहीं होती है. तो विद रिजल्ट वो प्लांटिंग में थोड़ी खाद देगा फार्मर को. अच्छा ये लेकिन ना निकलेगा, एक ट्यूबर से 2-3 निकलते हैं बेचारे को, 4 निकलते हैं. But then the yield potential is somewhat different. जहाँ मैंने वो last वाला photograph दिखाया था. How many tubers were there? How many tubers were there? So that speaks about something about the opportunity. अब आप बोलेंगे, अब हम करेंगे क्या? Now we get the potato tubers from the outside जो हम harvest करते हो, तो हमें एक और problem है ना, we have one additional problem. हमारा जो potato निकलता है in the month of June, which lasts for 3 months, क्योंकि dormancy होती है. Sprouted तो कोई खाएगा नहीं. आप sprouted आलू बाहर से लोगे? No, not for table purpose. तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है उस समय, उस टाइम पे? The problem is that वो जो 3 महीने के लिए हमारा इंडिजिनस पोटैटो है ना, वो हमारी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है. One more problem. Now one more problem and one more opportunity. Do you feel somewhere कि हमें और एरिया पोटैटो में लाना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा हो, so that जितनी प्रोडक्शन लेवल ज्यादा एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन को तो सफाइस करिए ना, कम से कम 3 महीने के लिए पेट सेल्फ सफिशिएंट तो बन जाए ना, वो भी नहीं है. You can see truckloads of potato continuously being imported, continuous, it's a continuous change. Now you have come to the conclusion हमारे पहले क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है नहीं जितना हमारे पास एरिया है. अभी तो मैंने वो नहीं बोला. Then I will be just coming to the figures जो मैंने वो write up में भी दिया, because I am trying to show you the real phase जो हमारा जहाँ others में 13% में J&K फॉल करता है इंडियन है नहीं. अच्छा अब जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज 3 टाइम्स है, हम सिंगल टाइम भी नहीं देख पाते. अब हम कैसे वो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बनाएंगे? ठीक है. व्हाट इज द सीड, व्हाट इज द प्लांटिंग मटेरियल इन केस ऑफ पोटैटो? इट इज पोटैटो. व्हाट इज द प्लांटिंग मटेरियल इन केस ऑफ टोमेटो? इज इट टोमेटो फ्रूट? नो, नो, नेवर.
100 tomato fruit, how many hundreds of seeds you are having? 200, 300, depends. In case of brinjal also, in hundreds. But what happens in case of potato? While you are having a potato plant, maybe you are having 6 tubers of potato. एक वहां से आपके खाने के लिए क्या लेंगे और सीड के लिए क्या लेंगे? वो पोटैटो पूरी वो वर्टिकल सीड आप लेते हैं. We do not utilize true potato seed of potato. We never utilize it. अभी तक तो नहीं करें except for the research purpose. So अब हम क्या करें? Now क्या opportunity है? What is the seed rate in case of potato? 20 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, 25 क्विंटल एक हेक्टेयर. मान के चलिए आप, अब मैं एक कनाल के हिसाब से, क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है, उसके हिसाब से तो हम बोलेंगे अगर एक कनाल में 1.5 क्विंटल आ सकता है, 1 से 1.5 क्विंटल. अब आप बोलो आपके घर में 10 कनाल में कितने क्विंटल वो हो गए? 15 क्विंटल. 15 quintals. What a joke! You can make these 15 quintals of potato available. The grocer who will sell it and we will eat them. Is there any technique by which we are able to save these all potato tubers and then क्या करेंगे? potato tubers को सेव करेंगे, खाने के लिए रखेंगे. लेकिन कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूटिलाइज करें और उसी से हम सीड बनाएं? हाँ है ना, पोटैटो का शूट है ना, शूट को कट करो तो घास हमें जरूरत ही नहीं है. शूट को कट करो, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो, वहां से छोटा प्लांट बनेगा पोटैटो को, वो बोला फील्ड में लगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व. दैट इज टिश्यू. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर? जो ये वाला हम छोटा प्लांट टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे ना, जिसको माइक्रो प्लांट कहते हैं, once we go for the development or the production of the micro plants, these are the disease free. इनका yield potential बहुत अच्छा होता है, इनके एडिशनल क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है. और अगर आप एक इंडस्ट्री बनाएंगे, टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री, पोटैटो टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री, हाउ डू यू पीपल फील? इज इट नेवर a very good entrepreneurship development program for you people? It will be a boon, it will be the best thing for your entire life. So that's actually why I want to show you the face of the tissue culture. What is the advantage of the tissue culture? Tissue culture lab में, एक lab में ही आप thousands में plants बनाएंगे, lakhs में plants बनाएंगे. उनको पॉलीहाउस में ले लो या ओपन फील्ड में ले लो, वहां से पोटैटोज निकलेंगे. एंड देन यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीथिंग, क्योंकि वो वाले अब माइक्रो प्लांट्स या तो फार्मर को डायरेक्टली देंगे या जो उससे मिनी ट्यूबर्स डेवलप होंगे ना, वो आपको फार्मर को दे दो सीड के लिए. सो इट विल बी अ कंटिन्यूअस साइकिल थ्रू आउट द ईयर, a never ending process, an unending process. Done? So you can see this was the वो जो disease वाला, वो यहाँ आपका yield बहुत ज़्यादा अच्छा है. Actually able to see it. क्या करेंगे अब हम टिश्यू कल्चर में भी क्या करें? अगर वो शूट जो हमने लिया, मान लीजिए जिस प्लांट से हमने शूट लिया टिश्यू कल्चर के लिए, अगर वो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का हुआ तो हालात ये है, ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से यील्ड निकलेगा. अगर वो वायरस फ्री से लिया होगा वो शूट, कितना होगा? नाउ यू पीपल आर एबल टू, सो दिस इज द डेवलप्ड इकोनॉमी एंड दिस इज द डेवलपिंग इकोनॉमी. Done? You people are able to now realize that how much actually opportunities there are. अच्छा, टिश्यू कल्चर का था. हमें ये तो पोटैटो का आपको पता है, मेन ट्यूबर जो हमने लगाया और साइड्स में इसके मल्टीप्लिकेशन को. So now for the basic quality planting material production in potato, हम क्या करते हैं? We have actually 4 methods जिससे हम पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो पोटैटो हम यूज कर सकते हैं फार्मर्स को सीड के लिए. ठीक है, एट एनी टाइम. वन इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सीड प्रोडक्शन. इसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दैट? फार्मर प्लांट्स अ ट्यूबर, फ्रॉम द ट्यूबर मल्टीप्लिकेशन होती है, एंड देन मेनी ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड. फ्रॉम वन ट्यूबर मेनी ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड. इट इज ट्यूबर टू ट्यूबर.
phenomenon. ट्यूबर लगाया, ट्यूबर लीक हो गई. So this is the conventional traditional. देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपने पोटैटो लगाया फील्ड इसी ने इसके, अगर उसमें क्या होगा, the size of the potato is large. जिसका जितना साइज होगा, जिसका जितना बड़ा घर, उसमें ज्यादा मेहमान होते हैं पैथोजेंस. टमाटो से छोटा होता है पैथोजेंस लोअर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोटैटो बड़ा होता है देन पैथोजेंस लोअर पिट्यूटरी. There may be bacteria, there may be virus, there may be fungi inside growing because the food is available in the abundant quantity. So good to have. So it is really very good. That is the reason हम बोलते हैं कि conventional seed production system में खराबी होती है. जो इससे ट्यूबर निकलते हैं ना, एक्चुअली उतने अच्छे नहीं होते हैं, डिजनरेशन फेज में चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं. सेकंड इज दैट माइक्रो प्रोपगेशन, जो हम टिश्यू कल्चर का बोल रहे थे, थोड़े हाइड्रोपोनिक्स एंड फोर्सेस एरोपोनिक्स. अब हम यहीं पे बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स का उतना अच्छा कि मतलब उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है जो एरोपोनिक्स से हम उपयोग टिश्यू कल्चर के. अब यहीं पे मैं शॉर्ट करके आपको बोलूंगा, अगर टिश्यू कल्चर से हमने वायरस फ्री प्लांट बनाए, छोटे छोटे प्लांट, और उनको बनाएंगे से माइक्रो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से. So with what technique actually now we are developing the micro plant with a tissue culture technique. And then if we will utilize them, these micro plants, we will not directly show them in the field. No. Now what we do, we will go to the pile house. Pile house में high-tech हमारा होगा. And then what happens? Pile house में micro plant हमने लगाए और micro plant से हमने aeroponic technology लगाई. Now it is actually a sort of marriage between the tissue culture technique and the aeroponics technology. दो बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में अभी हैं. एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम AR से टेक्नोलॉजी बोलते हैं, दैट्स द एपिकल रूट कटिंग टेक्नोलॉजी. नाउ अगर वो माइक्रो प्लांट हमने लिया और इसको एरोपोनिक सिस्टम में डाला एंड पॉली हाउस में ही इतने ट्यूबर्स हमारे बने जो जिनको हम सीड यूज कर सकते हैं. अब तो हमें सीड पे जाने की पहले जरूरत ही नहीं है. We are able to generate as many potatoes as you like, depending upon your capacity, depending upon your installation ability, depending upon your establishment of the laboratory, depending upon your number of the poly houses, depending upon how many persons actually are interested to go for the entrepreneurship development in producing the quality planting materials, potatoes, the tissue culture as well as the aeroponic technology. Done. This is actually what is happening in the developed countries. This is the reason that now you are having a very good light, good quality planting material in case of potato, जो आप farmer को दे रहे हैं in the developed countries, and then you see in the developed countries, and then you see very good productivity levels. Do you feel now that we can compete to the developed countries if we are going and we will ensure that we will go for tissue culture as well as plus combination of aeroponic technology? Yeah, I think it will be so comfortable to go for it. अब हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है, क्या टिश्यू कल्चर हम करते हैं, वो 2007 में. It was the former vice chancellor Dr. Nandhi, जिनका वो टिश्यू कल्चर में प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने DBT से फंड किया था. It was 2007. तब से चल रहा है. अभी बीच में थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से वो बीच में रुका था, फिर डिवीजन ही चला रहा था, डिवीजन ऑफ रिसर्च एज वेल एज दैट. देन पॉली टेक्नोलॉजी अभी हम यहाँ पे नहीं करते, बट देन आई वेंट टू द मोदी फोरम जहाँ पे वो करते हैं. इट इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी. अब आप बोलेंगे क्या सर इतना क्या है, हम माइक्रो प्लांट यहाँ से लेंगे, अब हम एरोपोनिक टेक्नोलॉजी में क्यों डालें? Do you know what is the best thing in this? What is the so good beauty about the developing the tubers in that aeroponic system? Yes, I will tell you. इसका मल्टीप्लिकेशन रेशियो बहुत होता है. जब आप नॉर्मल एक पोटैटो ट्यूबर फाइल में लगाते हैं, then what will be multiplication ratio between 1:4, 1:5, 1:6. From one tuber you can have 4, 5, 6 tubers, maybe more also. So each of them 1:10 ratio भी है. So this is the normal conventional system now we are for. अगर ये माइक्रो प्लांट टिश्यू कल्चर से लिया और मिक्स कर रहा है. अब एक और प्रॉब्लम, अगर उनका साइज बड़ा हो गया, then we have to cut the tuber because to make them down to the seed size. What is required actually? Done. This also. अब वो बोलेंगे सीड साइज में क्यों लेंगे, बड़ा ही लगाएंगे, you are wasting your resources. उतना थोड़ी है आप इतना बड़ा वो लगाएंगे. What is required and what is the optimum? We will plan that. उसे वेस्टेज की क्या जरूरत है? Now that is also clear. अब हम एक बात बोलेंगे, एरोपोनिक सिस्टम में क्या है, इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, सॉइल ही नहीं, मिट्टी ही नहीं, तो इसका रेशियो 1:100 तक भी जाता है. 1:100 तक भी
रिपोर्ट्स हैं एक माइक्रो प्लांट्स है जहां हम कुछ ही ट्यूबर दे पाते हैं, वहां से हम 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 50, 60, 70, 80, 90, 1:10. On a single micro plant you can have at least 100 also size tube. That छोटे उसे बोलते हैं then you give it to the farmer. How best is it according to now personal and technology can that is so this was the conventional system. This is the potato tuber. Cut it out, and these actually the tuber species of the tubers were then planted. Then अब आप देखिए ये वाला स्टंटन वाला this can never sell because it is the potato tuber after 8 months of 8-9 months. So you disadvantage जो मैंने बोला potato is propagated by tubers having accumulation of so many diseases, bacterial and viral diseases and degeneration. If the mother potato plant becomes infected with a disease during the growing season, each of the new daughter tubers is likely to be affected as well. ठीक है ना? So tubers also serve as a home for many insect pests. Method is laborious and time consuming. If field में आप just seed के लिए आलू लगाते हैं, then you know all sort of the agricultural operations. So it drastically reduces crop yield. Infections वगैरह होते हैं. Now many diseases. अब आप देखिए worldwide. Now we will see many deadly viruses and seed-borne pathogens are progressively accumulated in the tube. ठीक है? एक ट्यूबर में एक डिजीज थी, जैसे मल्टीपल ट्यूबर्स बन गई, लेकिन उनमें भी है. अब वो लगाए, वो भी है. अब साल भर साल ये एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं. अब इस एनी टेक्निक जिससे हम फिल्टर आउट डिजीज करें, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर आप शूट लेते हैं, शूट में डिजीज नहीं होती हैं, अगर होंगी भी कम होंगी. हाँ, अगर ज्यादा वायरस इन्फेक्टेड होगा फिर हम मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेंगे, तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में सारा आ जाता है. अब हम एक ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पोटैटो वायरस जो एक्स है occurs commonly worldwide and causes losses of 10 to 40% in single infection. Single infection हो गई TBX, कितना yield loss होगा? अब आप वर्ल्ड में मान लीजिए एक ही वायरस आ गया, जहां हमारा 100 क्विंटल निकलता, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में yield वहां 60 क्विंटल से निकली, 40% तो एक ही वायरस ने किया. How do you feel about the viruses? famine तो वहां हो गया था, irish famine, वायरस किया. Famine was because of the disease. Yes, fight of the infection. अब तो ये वायरस इसके बाद. मैंने तो ये फिर टिश्यू कल्चर का यहाँ पे ये है, ये वायरस टेस्ट ग्रुप है. अब जो एक्चुअली इन विट्रो कल्चर्स और मेरिस्टेमेटिक कल्चर हम इसमें यूजुअली करते हैं. नाउ फॉर यू पीपल, जहाँ पे आप सोचेंगे अब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक करते कैसे, तो हमारे पास एक मीडिया बनना चाहिए, खाना जो हम शूट लेंगे ना, शूट कटिंग लेंगे फील्ड से, उसमें एक नोड होना चाहिए. वन नोड शुड बी देयर. Cutting of the shoot which is having node, that is known as single node cutting, SNC. So SNC is a term and acronym for single node cutting. वो single node cutting हम लेंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. टेस्ट ट्यूब में तो खाना होना चाहिए ना, मीडिया तो बनाना है, फिर ट्रांसफर करना है, जहाँ पे उसको ट्रांसफर करेंगे उसमें टेस्ट ट्यूब में, एंड कल्चर हो जहाँ पे उसकी ग्रोथ होगी, कल्चर उसका होगा, एंड देन पार्ट में मीडिया. कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जिनका लिस्ट मैंने यहाँ दिया है. तो ये इनके ऑटोक्लेव है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, मीडिया डिस्पेंसर है, लैमिनार एयर फ्लो है, डीप फ्रीज है, हम यूज नहीं करते. तो हॉट एयर ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, ये मीडिया वगैरह के लिए बनाना और ये केमिकल्स को वेट करने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, हॉट प्लेट और रोटरी फ्लास्क. तो अगर मीडिया को आपको लगता है फ्लास्क में बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हमारे पास देन वी हैव प्रोटोकॉल. क्या प्रोटोकॉल है, कैसे हम क्या करते हैं, हम फील्ड में हम वही सिलेक्ट, फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड में
में हम जाएं और जाके हम पहले विजुअली देखेंगे। वायरस एफेक्टेड प्लांट होगा तो हम लेंगे नहीं। अब जो वायरस प्लांट एफेक्टेड प्लांट नहीं लगता है, विच द पोटैटो प्लांट्स विच विल बी हेल्दी, उनको हम एलाइजा टेस्ट में, एलाइजा टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं डिटेक्शन टेक्निक वायरस वगैरह है या नहीं। अगर फ्री होंगे तो से हवा, फिर हम उससे शूट कटिंग्स लेते हैं, सिंगल नोड कटिंग्स। ये है सिंगल नोड कटिंग। पोटैटो को शूट लिया नोड कटिंग से, तो then what we can do, उसके बाद ये कटिंग उठाई टेस्ट में करेंगे अंडर लैमिनार फ्लो, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है। जब वहां से शूट लाते हैं ना, उसको पहले वो एक प्रोटोकॉल होता है, इसको डिसइंफेक्शन वगैरह कैसे करेंगे, क्लोराइड यूज करें, अब तो बैन हो गया, स्टरलाइजेशन एजेंट्स आल्सो। उसके बाद जब हमने इसको स्टरलाइज किया, जो हमने एक्सप्लांट लाया था वहां से, उसको फिर हम अंडर लैमिनार या फ्लो कंडीशंस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। वो मीडिया हम बनाते हैं, देन वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ये वाली प्रेजेंटेशन में राइट अप में भी कितने केमिकल्स, कैसे, कितना, हाउ मच, तो यू कैन डू अ वर्टिकल फॉर दैट। लगाने के बाद उसको आप 21 डेज के लिए कल्चर रूम में रखेंगे, एबल टू हैव शूट ग्रोथ। शूट ग्रोथ जब होगी अभी रूट नहीं आएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जो शूट ग्रोथ की इसको आप कट करेंगे लैमिनार फ्लो। कट करने के बाद ये छोटी छोटी पीसेस बन जाएगी, 3 पीसेस ऑफ ईच माइक्रो। उसके बाद ये 3 पीसेस को 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाला, एंड देन जब ये अब सेकंड टाइम आ गया ना टेस्ट ट्यूब में, इसको रूटिंग भी होगी, शूटिंग। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विद सिंगल नोड कटिंग, बट नाउ इफ यू आर टेकिंग पोटैटो स्प्राउट्स, आपके पास आलू है, उससे स्प्राउट निकला, अगर आप डायरेक्टली वो स्प्राउट लगाएंगे मीडिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें सिंगल टाइम रूटिंग और शूटिंग, that's an advantage. Growth बहुत अच्छी है. So that also takes less time to developing a microplant than the single node cutting. So जब वो microplant बना, उसके बाद या तो आप डायरेक्टली अगर कन्वेंशनल मेथड ही आप फॉलो करेंगे, वो कन्वेंशनल नहीं बोल सकते, इन फाइल में लगाएंगे क्या नाम से पार्टिकुलेटर। अब तो हमें ट्यूबर नहीं ना दिया, हमने शूट किया। Now this way, how much actually seed potatoes you will be able to save across globe अगर हम टिश्यू कल्चर टेक्निक फॉलो करते हैं। Now the only problem with the tissue culture technique is that the tubers which are developed they are very costly. अब उसको कॉस्ट रिडक्शन के लिए एरोपोनिक टेक्नोलॉजी का यूज करो या एपिकल रूट टेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी। इसकी अगर आप ये वाली चीज करेंगे, दैट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमें बोलते हैं आपके पास क्या टिश्यू कल्चर के आलू हैं, ये on the internet also you will just type and then you will see टिश्यू कल्चर से आलू हम निकलते हैं ना, वो सीड पोटैटोज अगर यहाँ आपको नॉर्मल 50 रुपए में होते हैं, वो 100 रुपए में होते हैं। Now a very good opportunity for you to do this practical I'm telling you that. So I feel इसमें कोई क्वेश्चन something like that? So now how do you feel about this technique?